Okay, so let me record this session and we are going ahead with our group task. So I'm going to give you a task which was actually asked in HPCL, and I will give you this task for a couple of minutes and then come to each one of you, and each one of you will introduce the topic. And then at the end, each one of you will conclude also, and in between you will discuss the topic. So let me bring this task on your screen. And when you introduce the topic, you are not to see the task, you are to speak about the task, right? So go through it now. Okay, so I think you have gone through the task. Now I will ask each one of you to introduce the task. In that you have to tell about the task and you have to give direction to the discussion. You have to tell everybody what is the task and in which direction you want the discussion to go. So I start with Sachin. Thank you, sir, for giving me the opportunity to start the GT today. So the GT given to us about the bicycle company, which currently in the loss, and most of the employees it has is above 51 years old in the average age, and the company itself focuses on the village bicycles, selling bicycles to the village. Now, what we have what we have to give the two conclusions that we have to choose the employee of the year, and along with it, we have to focus on the policies what the company should adopt for the future. So, in my opinion, what the company is lacking is their policies in the marketing, because since the company from फार मतलब बहुत सालों से अभी तक चलता आ रहा है कंपनी, तो इसकी क्वालिटी, इसकी जो बाईसाइकिल क्वालिटी, उस पर कोई डिस्कशन नहीं किया जा सकता. बट रिसेंट सिनेरियो में क्या है सर, हमारा जो पॉपुलेशन वो चेंज हो रहा है. मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज द यूथ. तो वी हैव टू फोकस द ऑन द यूथ, कि हमें यूथ को फोकस करते हुए अपने चीज़ों को कैसे लिक्रेटिव बनाते हुए और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को कैसे फोकस करते हुए चीज़ों को ले जाना चाहिए. और साथ ही साथ अगर हमें अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेशन देने के लिए, जो कंपनी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, उन्हें और ज़्यादा मोटिवेशन देने की ज़रूरत है. और साथ ही साथ जो अभी बहुत ज़्यादा
एम्प्लॉय जो एज ज्यादा हो गया है, वो हो सकता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अभी अपना योगदान को नहीं दे पाए, तो वहाँ हमें यंग लीडर को लाना चाहिए। और साथ ही साथ जो हमारा अकाउंट डिपार्टमेंट है, वो हम अपने एक्सपीरियंस जो एम्प्लॉय हैं उन्हें शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि हमें इस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए, आई थिंक। एंड दैट्स अबाउट आवर, एंड फर्दर वी कैन डिस्कस ऑन इट। दैट्स ऑल अबाउट। Okay, next. You are not to take more than 1 minute. Next. Anybody else? Okay, Sonu, go ahead. एक्चुअली हमारी जो एम्प्लॉय की एवरेज एज है 51.8 ईयर है, जो काफी ज्यादा है। तो हमें एज एंड कंपनी इज ऑल्सो रनिंग अंडर लॉ, तो हमें सबसे पहले ये करना होगा कि हमें यंग एक्सपीरियंस एम्प्लॉय को हायर करना होगा, ताकि उनके पास एक एनर्जी होती है जिससे they can put more efforts in increasing the sales and production. And second option is that कि हमें किसे बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर देना चाहिए, जिस एम्प्लॉय ने सेल्स में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, एंड कंट्रीब्यूशन के साथ साथ ही उसने एक लीडरशिप का रोल प्ले किया है, ताकि सभी एम्प्लॉय को, जो रेस्ट ऑफ दी 8 एम्प्लॉय है, वो प्रमोट हो सके आगे कुछ करने के लिए। तो हम उसे बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड देंगे। एंड अदर एम्प्लॉय को हम रिवॉर्ड भी दे सकते हैं, ताकि वे डिमोरलाइज ना हो एंड उनका इंटरेस्ट बना रहे। थैंक यू सर। Okay, next. Good morning, team. My name is Mayur Goyal, and the topic which is given for us is a very interesting topic because we are also from mechanical background, and the topic is bicycle manufacturing company. So the topic which is given for us today for discussion that हमारे जो कंपनी में जो एम्प्लॉय है उनकी एज अराउंड 51.8 ईयर है, जो कि सोच रहे अपने सेटलमेंट प्लान के लिए सोच रहे हैं। उनका मोरल भी डाउन है। हमें और कंपनी टारगेट कर रही है रूरल मार्केट को, जिसके लिए जिसमें हमारे कंडीशन दी हुई है कि हमारे पास हमारे 8 एम्प्लॉय हैं जिन्होंने बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करा है हमारी इंडस्ट्री के लिए। तो हमें उन्हें प्रायोरिटाइज करना है कि किसको हमें एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड देना चाहिए। तो नाउ आई ओपन द हाउस फॉर डिस्कशन फॉर यू ऑल। Next. Good evening, friends. Myself, Jobin. So, the topic given here is about a bicycle company which is currently running under loss. And it is given that every employee is almost 52 years of age, and they are already even they could be working for 8 more years maybe, but still they are already thinking about retirement plans and settlement plans. It shows that they are completely complacent and not at all serious about what they're doing. And that is probably one of the main reasons why this company is under loss, that its employees are not actually active and is not having any energy. Agree with what Sonu said about having no energy. So I suggest that they have to be looking more into youth and the energy that youth possess. And so uh, we had to find two conclusions here of what the policies should be from the company side to increase their sales and revenue. And for that, we have to find out what the actual cost is. And if we can find out that what the actual cost is by our group discussion, then we can actually find out the policies. And the second will be to choose the employee of the year. So 8 people have significantly contributed, but we have to choose that person who has done the most contribution, who has done the most impact on increasing the sales and revenue. So yeah, that's all from my side. Yeah. Friends, there is a manufacturing company which is currently running under loss, and the average age of the employees is above 51.8 years, and the morale of the employees is also low. And the company is currently targeting the rural market. And further, we have to make the policies, policies that what kind of policies adopt the company. And the 8 employees of the companies contributed more, and we have to choose the one that significant contribution have done. And first of all, we do and internal SWOT analysis of the company, and the external SWOT analysis of the customer and marketing base.
On the base of that, we make the policies on the of the internal what policies we adopt for the company, and further we proceed. And I think for the uh, person to be given the reward, that should be in such adverse condition for the company that motivation put it high of all the employees. Now I open the house for the group task to be discussed. Okay. Next. Yeah, good evening all. The topic of our GT is like there is a case we have been alerted that a bicycle manufacturing company is there, and it is going into loss, and the average age of the employee of the company is 51.8 years, and they are looking for the settlement plans as of now. So like from this we can we are getting some view of the employees that they are not looking for any future work. They are just thinking of the settlement plans, and that shows that their morale is already down. And there are also some people, 8 people are there who are doing some significant work for the company. And we have two cases, like we have to discuss on the two topics, like we have to figure out the policy, as well as we have to policy for better to increase the sales of the company. And another is that we have to choose the what we say, employee of the year. So like for according to me, the policy we should think on like recruiting the fresh people, like young minds, so that they can have some different perspective for this loss, that we can be recovered from that. And also like companies also targeting to the rural areas as well. And another yeah, so I open the discussion here for myself. Anybody left? Okay. Yes, sir. Tarun this side. Hello. Yeah, go ahead. Go ahead, Tarun. Tarun, unmute yourself. Okay, so I think now it's, we enter into the second stage. In the second stage, you people are to talk to others, listen to others, and come out with the decision through consensus. So I would like to hear the solution from each one of you at the end of the discussion. जैसे आपने introduction किया है, I want to see how you conclude also. So unmute yourself, each one of you, and start participation. As the old employee, पर्सन है, तो हम कुछ टेक्निकल मेथड्स यूज कर सकते हैं कि हम अपने पहले तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। उसके लिए हम कुछ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल टूल यूज कर सकते हैं, जैसे कि पेरेटो एनालिसिस और फिशबोन डायग्राम, जिससे कि हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा मेन कॉज क्या है जिससे कि हमारा सेल्स अच्छी नहीं हो पा रही। तो इसके लिए हम सेल्स अच्छी नहीं हो पा रही। फिर सेकंड थिंग है हमारा मोरल, जो एम्प्लॉयज का डाउन है। सबसे पहले हमें उनका मोरल इंक्रीज करना होगा, क्योंकि किसी भी कंपनी की ग्रोथ के लिए एम्प्लॉय सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि जैसा पहले सुमन ने डिस्कस किया था कि हमें यहाँ पर दो टीम को बनाना चाहिए। एक टीम जो बनेगी वो हमारा इंटरनल एनालिसिस करेगी, और एक टीम जो बनेगी वो हमारा बाहर से जो कस्टमर फीडबैक है वो लेकर आएगी। कस्टमर हमारे जो पहले जो हमारा जो सेल्स बहुत ज्यादा था, अब वो इतना ज्यादा सेल क्यों नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके से हम फॉरवर्ड करना चाहिए कि पहले एक टीम जो इंटरनल पॉलिसी जो बनाएगी वो हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करेगी, और ब्रेनस्टॉर्मिंग में वो हमें लिस्ट निकाल कर देगी कि जो हमारे कंपनीज की क्या क्या प्रॉब्लम्स है। जैसे वन ऑफ द प्रॉब्लम हमारे क्वेश्चन क्वालिटी कंट्रोल की मदद से पता लगा सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, क्योंकि ये मेथड बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, मतलब अच्छे हैं, और इन्हें मैं वो तो सही है। जैसे कि कुछ प्रॉब्लम्स हमें मेंशन किए हुए हैं, हमारे जो दिया हुआ है पहले से मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि हमारा मोरल हाई नहीं है, जो हमारा जो एम्प्लॉय जो ओवर एज है। तो इन सारे प्रॉब्लम को हम लिस्ट वाइज मेंशन करें कि हमारे इंटरनल पॉलिसीज में आ जाए। ओवर एज है ना, ओवर एज है, हम उनसे बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि हम उसके एक्सपीरियंस को भुला नहीं सकते। उन्होंने अपनी 51.8 ईयर को इस कंपनी को दिया है, तो हम उनके पास बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, तो उनके एक्सपीरियंस को यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल, हम उसका उनका जो उनके एक्सपीरियंस को न्यू रिक्रूट में
रिक्रूटमेंट करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे कि HR पर्सनल्स की तरह वो काम कर सकते हैं और न्यू रिक्रूटमेंट में हेल्प कर सकते हैं। और जो काम में इंटरेस्ट नहीं है, हम उनको एक उनका सेटलमेंट प्लान भी दे सकते हैं। हाँ, हमने कुछ और आइडिया और प्रोवाइड साथ ही कर साथ क्या कर सकते सकते हैं, हैं अपने कि जो सेटलमेंट न्यू कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट आएगा उनके हम लोग जो उनका जो ट्रेनिंग पर्पस होगा, वो ट्रेनिंग पर्पस में एक्सपीरियंस जो हमारे एम्प्लॉय है वो ट्रेनिंग भी Yes, दे yes. सकते हैं उन सारों हाँ को, हाँ, ये तो बहुत दैट बढ़िया विल है। हेल्प आल्सो। Yeah, and one more Good point idea. I would like to add is that we can have a roundtable discussion with all the experienced persons that where the things went wrong. Like one of my friend told about fishbone diagram. Like we can see some root cause analysis, and we can like have a healthy discussion on a roundtable, and we can have some conclusion from that. And from like newly people that will be recruiting, we can discuss with them as well that what they think about these things, and like we can proceed like this. बिल्कुल। Apart from all these, we can use automation in manufacturing process. तो इससे हमारा मैन्युफैक्चरिंग काफी स्मूथ हो जाएगा। एंड only we have to deal with is in सेलिंग्स। तो सेलिंग्स के लिए हमें जो हमारे एक्सपीरियंस जो ओल्ड एज पीपल है, जो एक्सपीरियंस सोनू पीपल है, की सोनू का आइडिया बहुत ही अच्छा है। हम ऑटोमेशन को लगा सकते हैं जिससे कि हमारा आगे प्रोडक्शन बहुत अच्छा स्मूथ हो और जाएगा। जो हमारी क्वालिटी होगी Extra effort. प्रोडक्ट की, वो भी बहुत अच्छी होगी। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ऑटोमेशन के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, तो क्या कंपनी इस समय इस स्टेज पे है कि वो उतना ज्यादा इन्वेस्ट कर सके? क्योंकि ऑटोमेशन के लिए बहुत ज्यादा नए इक्विपमेंट्स लाने पड़ेंगे, नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। यस यस, फर्स्ट हमारे पास जो रिसोर्सेज हमें हैं कॉस्ट हमें एनालिसिस उनको भी करना यूटिलाइज पड़ेगा करना साथ ही चाहिए साथ। ज्यादा से ज्यादा। यस Yeah, we can try to raise some funding rounds as well. फंडिंग तो हमें रेज करनी होगी, बिकॉज बिना इन्वेस्टमेंट के तो हमारा बिजनेस चल ही नहीं, ग्रो ही नहीं कर पाएगा। यस, और साथ ही साथ फर्स्ट हम ये भी कॉन्ट्रैक्ट देखना बेस है पे ना। न्यू यस, रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट और हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे न्यू रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, फिर जब तक ब्रेक इवन पॉइंट हमारा मीट होता है और आगे हम रूरल मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, तो हाँ। उससे अच्छा है कि हम कोई और मार्केट भी टारगेट करें, जैसे कि अर्बन वन। और रूरल मार्केट में हम ओनली वही बाइसिकल होती है जैसे 3000 वाली, तो उसमें हम रेंज ऑफ प्रोडक्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। चिल्ड्रन के लिए अलग मार्केट प्रोवाइड कर सकते रूरल में बहुत सारे लोग होते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो यूज करते हैं बाइसिकल को, जैसे कि कुछ लड़कियां भी यूज करती हैं, तो उनके लिए तो वो वाली साइकिल नहीं होती। हैं। हाँ, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं ना, हाँ हाँ रेंज हाँ। प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट से भी ऑर्डर ले चिल्ड्रन के सकते हैं लिए। यस साइकिल यस प्रोवाइड करने का, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट है जो सरकारी स्कूल्स में बाइसिकल प्रोवाइड कर रही है, तो हम गवर्नमेंट से यस ऑर्डर लेके हम स्कूल्स में साइकिल प्रोवाइड कर सकते हैं। इस कारण इसलिए हमारे पास ऑर्डर की संख्या भी ज्यादा होगी, तो रेवेन्यू भी ज्यादा जनरेट होगा। इस प्रकार से Yes, yes. रेवेन्यू की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो सकती है। यस यस Yes. सोनू, उससे क्या होगा, हमारा जो है करेंट जो हमारा रेवेन्यू है वो हमारा सस्टेन कर पाएगा, एटलीस्ट हम सस्टेन कर पाएंगे। और फर्दर हम जो है वो हम अपना इकोनॉमी को जनरेट कर कर, जैसे कि बैंक से लोन लेकर या किसी और कंपनी के साथ टाई अप कर कर भी हम कुछ रेवेन्यू को उठा सकते हैं, हाँ और उससे हम फर्दर ऑटोमेशन कर सकते हैं और चीजें के हाँ आगे हाँ, बिल्कुल फर्दर बिल्कुल प्रोसीड कर बिल्कुल। सकते हैं लॉन्ग और टर्म। हम ये भी कर सकते हैं, जैसे हमें रूरल एरिया को टारगेट कर रहे हैं, तो उसमें हम वहाँ की लोकल एम्प्लॉय को हायर करेंगे, जिससे कि वो बता पाएगा कि हमारे साइकिल के क्या क्या यूजेस हैं, जिससे कि हमारा एक तो हमारा हम लोगों को साइकिल के लिए कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। एक तो हम उन्हें बता सकते हैं कि साइकिल के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इन्वायरमेंट Yes. फ्रेंडली होती है साइकिल। Yes, yes. मयूर आई एम नॉट हियर टोटली एग्री टू यू एज कि हमें लोकल को हायर करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ कि हमें वो फीडबैक दे सके, क्योंकि फीडबैक हम डायरेक्ट कस्टमर से जाकर भी ले सकते हैं। हम लोग हायर करते हैं इन टर्म्स ऑफ फॉर द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, दैट इज अदर कंसर्न, बट फॉर द सेक ऑफ फीडबैक हम लोग डायरेक्ट कस्टमर से जाकर बात कर कर फीडबैक के कि लिए उन्हें क्या नीड है, नहीं, या हम डायरेक्ट एनालाइज कर लेंगे कि हमारी जो पैरेलल फीडबैक के लिए कंपनी नहीं, जो अलग कंपनी एडवर्टाइजमेंट के चल लिए, रही है फीडबैक के लिए नहीं, एडवर्टाइजमेंट के लिए, फीडबैक के लिए नहीं, एडवर्टाइजमेंट के लिए। एडवर्टाइजमेंट के लिए फ्रेंड हम ऐसे कर सकते हैं कि Yes, yes. चिल्ड्रन ज्यादा फोकस करते हैं, जो कार्टून होते हैं वो साइकिल पे जो पेंटिंग होती है उस पे हम बिल्कुल। जैसे कि डोरेमोन और नोबिता का जो होता है कार्टून लगा सकते हैं, वो ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। यंगस्टर को और एक यंगस्टर को Like एक we मेल can को समझाने के लिए तो हमें वहीं के लोग को यूज करना पड़ेगा ना, जिससे कि वो उनकी लैंग्वेज में फैमिलियर होगा। अब वो उन्हें अच्छे से समझा पाएगा कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या यूज है साइकिल के। साइकिल में हमें पेट्रोल खर्च नहीं करना होगा, जिससे कि हमारे पैसे बच जाएंगे।
Yes, और yes. Mayur, Also, we can take help of some social media influencer also, like the people following him for all the tech companies, like I'm not able to recall the names of the people. Like some social media influencer will be good to do some advertisement बट because सोशल number of मीडिया people will be इन्फ्लुएंसर से following him. ज्यादा बेटर रहेगा कि हम उसी गांव में ऐसे लोगों को सिलेक्ट करें जिनकी कुछ रेपुटेशन है, जिनकी Yeah, कुछ along with village, I am talking about cities as well because we have to generate revenue from all sides. नहीं सिटीज So पर, लेकिन yeah, उसमें कंडीशन दी हुई है ना कि हमें रूरल पे फोकस करना है, तो हम वी स्टिक okay, टू ऑन रूरल ओनली। yeah, हम yeah. ऐसा कोई कम्पिटिटिव एग्जाम कंपटीशन लॉन्च कर सकते हैं गांव में, क्या कोई ऐसा हाँ कोई कंपटीशन जो बिल्कुल साइकिल बिल्कुल, के कंपटीशन हो, तो हाँ वहां हाँ से भी हम इस चीज को अवेयरनेस ला सकते हैं मतलब कि बिल्कुल गांव बिल्कुल के अंदर बिल्कुल। में, कि जैसा कि Yes, वो yes. लोग ज्यादा से ज्यादा यूज कर सके, और वहां हम हम प्राइज मनी इन्फ्लुएंसर्स को बुलाकर इस चीज हम को इवेंट एज में प्राइज एडवर्टाइजमेंट हम लोग ला मनी सकते हैं। हम इवेंट में प्राइज मनी की जगह हम ऐसे भी साइकिल भी बढ़ा प्रोवाइड सकते करा हैं। सकते यस हैं। यस, स्कूल बिल्कुल, में जो टॉपर बच्चा होता है उसको हाँ हम हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे दे सकते हैं साइकिल। May I add something? यस ये यस। यस yeah, yes. हम साइकिल की सेलिंग को ऐसे भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर कोई आसपास रेप्यूटेड स्कूल है जहाँ पर बहुत सारे लड़के आते हैं, तो आसपास के गांवों से आते हैं, तो हम स्कूल में जाकर के वहाँ के बच्चों को एक ऑफर दे देते हैं कि हम तुम्हें इतना % डिस्काउंट देंगे अगर आप हमारी साइकिल को लोगे। तो उनके बीच तो वो लोग जरूर ले लेंगे, क्योंकि वो लोग काफी दूर से शायद पैदल आते होंगे, उनके लिए भी फायदा होगा इससे, तो शायद सेल्स बढ़ सकती है। इसमें भी वन ऑफ द पॉइंट फॉर इंक्रीजिंग द सेल्स। यस यू हैव गुड पॉइंट। और एक चीज और कर सकते हैं कि हम अपने साइकिल को कैसे लिक्रेटिव बनाए, वो दिखने में कैसा अच्छा हो, ताकि हाँ वो हम एज वो के मार्केटिंग। अकॉर्डिंग यस डिजाइन करेंगे कि किस एज पर्पस के लिए हम बना रहे हैं। जैसे कि Yes. बच्चों के लिए यस सुमन ने बोला कि हम कार्टून प्रिंट कर सकते हैं, और लड़कियों के लिए हम ऐसी कार्स बना सकते हैं जिससे कि उन्हें साइकिल बना सकते हैं जिसमें कि कलर उन्हें स्पेसिफिक प्रॉब्लम ना वन। हो। यस, कलर यस यस। स्पेसिफिक वन। Uh, और कलर friends, कुछ one यस स्पेसिफिक thing. एर्गोनॉमिक वन। And in today's time, and there is a gear वाली साइकिल, वो काफी प्रचलन में है, तो वो भी ला सकते हैं हम। बट लोगों के बीच में वी काफी फोकस क्रेज है ऑन उसका। रूरल एरिया, तो रूरल एरिया में शायद मे बी लोग इतने पैसे खर्च ना करें गियर वाली साइकिल के लिए, तो हमें कॉस्ट रिडक्शन पे भी सोचना होगा। यस एक और चीज एडवांसमेंट कर सकते हैं। अभी क्या है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो हम ऐसा कोई डिजिटल किट अपने साइकिल के फ्रंट में लगा दें कि आपके इतने साइकिल चलाने से आपके इतना कैलोरी ऐसा कंज्यूम हुआ है, इस तरह जो बिल्कुल हमारे बिल्कुल, बहुत वॉचेज में वेरी होती गुड है। आइडिया, वेरी गुड हम आइडिया। इस यस तरह की यस, हम चीजें वेरी। नहीं लाएंगे तो चीजें अट्रैक्ट करेंगे कस्टमर को। तो हमारा आई थिंक सेल्स और रेवेन्यू पे तो हम आ गए कि लेकिन हमें इस sales केस कैसे में बढ़ानी वो है। लोग Sales काफी कैसे बढ़ा सकते हैं कि हम वहीं के किसी लोग को हायर करें, मतलब जो भी वहाँ पे पर्सनैलिटी गुड है। जैसे कि गांव में क्या होता है, जो लोग टॉप कर जाते हैं उनकी लोग बात ज्यादा सुनते हैं किसी भी एग्जाम में, Yes, तो हम yes, उन्हें I उन्हें agree. हायर कर सकते हैं। हाँ, मे आई ऐड समथिंग, वन मोर सेल्स बढ़ेगी तो पॉइंट। रिवेन्यू आगे बढ़ जाएगा। हम प्राइज मनी के तौर पे अपनी साइकिल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं गर्ल्स को। ओके, यस यस। मैं एक पॉइंट और Friends, ऐड करना one thing I would like to add, friends. When we're actually discussing to increase the sales and revenue, we are actually only thinking about the selling side. We are not actually thinking about the procurement side of the raw materials. We don't know whether the raw materials that we procured, because this was a company, we don't know whether the managers were trying to get a profit, and they were actually procuring very bad raw materials, which actually were very badly built and also having very bad quality. It was probably one of the reasons why every people got tired of their services and eventually dropped it off. यस जुबिन, So यहाँ we पे एक have और to. चीज कर सकते हैं, हम अपने सर्विस सेंटर जो है वो और लॉन्च कर सकते हैं। जैसे कि हमारी साइकिल जो बहुत जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हो सकती है कि अगर हम सर्विस सेंटर अपने लॉन्च करें गांव में, हर गांव में या 3-4 गांव पे एक सर्विस सेंटर अपना लॉन्च कर देते सचिन, हैं। तुमने बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला। इससे हम क्या कर प्रोवाइड भी सकते कर हैं, सकते उनके जो हैं। एम्प्लॉय का जो सेटलमेंट है वो भी हो जाएगा उससे। Yes, अगर वो yes. उससे एक रिटायर साल के होंगे लिए तो फ्री सर्विस अपने प्रोवाइड भी अपने कर सकते अपने हैं। सेंटर खोल सकते हैं उस गांव में, जिससे कि उनका आगे सेटलमेंट प्लान बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके, हम एक साल के लिए फ्री सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि नए व्हीकल्स में जनरली ये होता है कि जो नए व्हीकल्स Okay, खरीदते last हैं 2 उनके minutes. लिए Last 2 minutes, and then each one of you is to conclude. एम्प्लॉय ऑफ द ईयर को हमें कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, हमें देखना चाहिए पहले तो ये डिसाइड करना होगा कि किसने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। बिकॉज हम पार्शियलिटी नहीं कर सकते, अगर तो हम ऐसे कर देंगे किसी को भी दे देंगे तो फिर ऐसे तो एम्प्लॉय का मोरल डाउन हो जाएगा और भी ज्यादा। Yes, यहाँ पे Yeah, मैं with that कहना we चाहता also हूँ। have to see यस, the हम how ऐसे much impact his decision is creating in the company as well. We have to like look at that criteria as well. एक यहाँ पे साथ ही एक चीज देखना पड़ेगा हमें कि जो एम्प्लॉयमेंट
8 एम्प्लॉय जो है हमें मेंशन किया गया है कि बहुत ज्यादा अच्छे काम कर रहे हैं, तो हमें उस चीज को कंपनी में प्रमोट करना चाहिए, उन्हीं 8 में से किसी एक को एम्प्लॉय ऑफ द ईयर देना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ द ईयर का जो अवार्ड मिलना चाहिए वो हमें एम्प्लॉयज के द्वारा ही दिया जाना चाहिए। जो बहुत ज्यादा ओल्ड एज एम्प्लॉय है, जिन्होंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा काम किया, सालों से काम किया है, अगर उन्हीं के द्वारा हम उस एम्प्लॉय ऑफ द ईयर yes दिलवाएं yes तो हम एक रेस्पेक्ट भी बट दे रहे वी हैं हैव टू अपने फर्स्ट एम्प्लॉय डिसाइड ना को। चूज किसको आउट देना ना होगा। कौन ये किसको तो देना बाद में डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, पहले तो हमें डिसाइड करना होगा किसको देना होगा। ना वो अच्छा, वो मैं बोल रहा कि मेरे अनुसार वो 8 एम्प्लॉय जो बहुत अच्छा काम करे उन्हीं में से देना चाहिए, ताकि वो एक हाँ तो हम मोटिवेशन का काम उस करेगा। एम्प्लॉय को चूज कर सकते हैं ना जो इस एडवर्स कंडीशन में वो कंपनी को ब्रेक इवन मीट किया हो, मोटिवेशन बिल्कुल और बिल्कुल, मोरल हाई जिसने किया हो। कंपनी का साथ कभी ना छोड़ा हो और कंपनी के Yes. लिए हमेशा अपना बेस्ट देने का कोशिश किया हो। We should look नहीं for मेरे whoever has अनुसार जो achieved the target within the very least amount of time, whoever is able to achieve the target, and also in a very honest way, so that they don't spoil the name of the company. Because the company is in a phase of regrowth. So if they spoil the name, then it will again go into a very big loss. So making यस sure that 8 एम्प्लॉयज डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से होंगे ना, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, yeah, तो वी हैव टू स्पेसिफाई वन दैट विच डिपार्टमेंट इज टू बी गिवन अवार्ड। यस, तो मेरे अकॉर्डिंग तो हमें सेल्स और रिवेन्यू बढ़ाने हैं, तो हमें पहले तो जो सेल्स और रिवेन्यू बढ़ा रहा है उसका ही मोटिवेशन हाई करना होगा, क्योंकि उससे ही सारी चीजें लिंक है। अगर जो हमारे पास सेल्स नहीं होगी यस तो हम प्रोडक्शन कर लेंगे, उसका कोई बेनिफिट होने वाला है नहीं। यस यस तो हमें सबसे पहले हमें जो उसका जो सेल्स और सेल्स कर रहा है उसको पहले मोटिवेट करो ज्यादा से ज्यादा। also one point, यस the company should be actually concentrating on hiring young people who are actually MBA graduates, who actually know more scientific techniques about marketing and other strategies on sales and revenue, rather than people who are more experienced. Sometimes education will play a more comparatively better role than experience. So suggest that they should also be hiring some MBA graduates also. yes But if we don't have any more funding, then we can hire interns as well instead of Yeah, employees. yeah, interns as well. And after we reach a settlement point, then we can take them as इट्स अ वेरी गुड permanent आइडिया। employees. That is good. Yes, फ्रेंड्स yes. समराइज कर लेते हैं एक बार पॉइंट्स को। नहीं यहाँ पे पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हमें एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड देना किसे है, सेल्स या हमें एक्सपीरियंस को देना है, या जो यंग जो एम्प्लॉय है, जो 8 एम्प्लॉय में से किसी एक को देना है। लेट्स मी डिसाइड फर्स्ट। 8 को ही देना यस है ना, दिस इज 8 को ही देना स्पेसिफाइड। है। 8 को ही देना है। The ओके, one who is 8 working को very hard 8 for में the से किसी एक company, को देना। giving और all दैट of इज his time, and whose सेल्स एंड decision is creating impact on the company. yes, I think the sales and marketing department employees should be awarded because Yes. because I think where we are lacking in the sales and marketing, so we should cater बिल्कुल that part only as well. बिल्कुल। Yeah. Okay. Okay, so now you are ready for conclusion. I want Yes. each one of you one by one conclude this entire discussion. Anyone start? Thank you, sir. So, on the behalf of the team, I would like to conclude the whole GT. Sir, what we have discussed about is that the companies in the company in loss, then first we have to think and analyze where we are lacking. For this, we will make the two teams. One team that will decide that will focus on the internal policies where we are lacking, and the other team will focus on the external policies, that what the feedback of the customers are. When we go through the internal policy, then we come to know about that the employees are not the old age employees are too much in the company. The average age of the employees over 51. Then we have decided to hire the employees, and we will award by the award experienced employee as well. Thank you, sir. Yeah, thank So, you, sir, for giving us so the team, opportunity to conclude this GT. So what our discussion has been gone through is that we will be having a roundtable discussion with all the experienced employees
doing some Pareto chart analysis and fishbone diagram analysis. And we will be making two teams that will do internal and external analysis. Of the year, the one who is working very hard for the company, and also his decision is making profit to the company, will be handing the award to that particular employee. And our discussion has gone through according to our discussion, the sales and marketing employee will be the one to whom we are going to select as an employee of the year. Yeah, thank you, sir. Okay, anybody left? Yes, हम sir. टीम हमारा बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, सबने बहुत ही अच्छे अपने पॉइंट्स दिए। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। सबसे पहले तो हमें स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल टूल का यूज करके हमें पता लगाना है कि हमारी कहाँ पे कमी आ रही है और उसका रूट कॉज क्या है। तो उसके बाद जैसे कि सोनू ने उसके बाद हमें जैसे इंक्रीज करना है अपने सेल्स और रिवेन्यू को, तो हम ऐसी पर्सनैलिटी को हायर करें जो कि उसी गांव रूरल एरिया से बिलोंग करे, और प्लस वो उस गांव में कुछ ना कुछ पर्सनैलिटी हो, जैसे कि टॉपर बच्चे होते हैं तो उनकी बात गांव में सुनते हैं लोग। फिर सेकंड थिंग, जैसे सोनू ने बोला, हम उन्हें कस्टमर को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, हम उन्हें फ्री सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, और हम अपने कैसे सेल्स अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं विद ऑटोमेशन। अब जैसे सचिन ने बोला, हम कैलोरी मीटर लगा सकते हैं जिससे कि उन्हें पता लगेगा कि उन्होंने कितनी कैलोरी बर्न करी है विद बाय अपनी साइकिल चला के, तो जिससे कि उनकी फिटनेस का भी अच्छा पॉइंट बन जाएगा। फिर सुमन ने बोला कि हम स्कूल में प्राइज की तरह से अपनी साइकिल्स को दे सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। हम उसके लिए थोड़ी सी फीस रख सकते हैं, मिनिमम कॉस्ट, जिससे कि हम अपनी साइकिल का प्राइस भी निकाल सकें। फिर तो हम उसके बाद हम रिक्रूट कर सकते हैं न्यू एज को, क्योंकि हमारे जो एम्प्लॉय हैं वो 51.8 ईयर के समथिंग हो गए हैं। तो जिससे कि अब हम जो हम नए इंटर्न को लेंगे उनके लिए जो ट्रेनिंग का काम कर सकते हैं, एम्प्लॉय भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। अब फिर लास्ट पॉइंट आते हैं हम एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। एम्प्लॉय ऑफ द ईयर जैसे कि हम सबने डिसाइड किया है कि मैनेजमेंट में ही रखना चाहिए, और जो कि सेल्स बढ़ाए, क्योंकि सेल्स पे ही सब कुछ डिपेंड करता है, हमारा प्रोडक्शन भी और हमारा सारा R&D डिपार्टमेंट। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Okay. मैं बोलता हूँ। Yes, go ahead. Okay. Hello friends, as the group discussion was wonderful and we have come with many solutions. So as the main problem of company is under loss, because the moral of the employee is not so good, as the age of the employee is almost more than 50 years. So इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें यंग प्रोफेशनल एम्प्लॉय को हायर करना होगा, तो जिससे उनके बीच में एक एनर्जी रहती है, तो हम सेल्स को बढ़ा सकते हैं। जो हमारे जो ओल्ड एज एम्प्लॉय है, हम उसको फायर नहीं कर सकते, तो बट दे आर एक्सपीरियंस, तो हम उनसे एक्सपीरियंस लेकर के जो नए एम्प्लॉय को ट्रेन कर सकते हैं अच्छे से। तो हमारा जो मेन टारगेट है सेल्स का, वो रूरल एरिया है। तो हम क्या कर सकते हैं कि रूरल एरिया में सेल्स को बढ़ाने के लिए हम वहाँ के किसी फेमस पर्सनैलिटी को ला करके सच एज टॉपर, उनसे बात करके हम उनको साइकिल्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड हम सेल्स को ऐसे भी बढ़ा सकते हैं कि हम जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ डिस्काउंट ऑफर करके हम उन्हें साइकिल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम फ्री सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं अप टू 1 ईयर तक, एंड वी कैन हायर इंटर्न्स, ओके, एंड टू गिव द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड। उसके लिए हमें जो 8 एम्प्लॉय है उनमें से जो सबसे ज्यादा सेल्स में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, हमें उन्हीं में से किसी एक को सेलेक्ट करके उसे बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर देना चाहिए हम। एंड आई वांट टू ऐड वन मोर पॉइंट, वी कैन यूज ऑटोमेशन इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जिससे मैन्युफैक्चरिंग बहुत स्मूथली चलेगा। थैंक यू। Okay, everybody is done. Yeah, so friends, actually we have reached the end of the conclusion of our group task. So we had a healthy argument among us, and we have actually reached an agreement. I'll be summarizing those points. So initially, it's being given that the company is currently under a loss,
and we have to somehow uplift the morale of the people initially. And so, given that the employees are actually 52 years of age, we understand that they will have having enough and more experience, and and Suman said how we should be making use of that experience rather than expelling them out. So we want a mix of both experienced older generation and a mix of youth. And for that, Ankit told about we'll be taking in MK interns, not as permanent employees, but as interns. And after the company stabilizes, then we can take them as permanent employees or something. And also, Mayur said about Pareto analysis and other scientific techniques that we should be employing. But initially, we won't be going for any kind of automation or any kind of computerized systems, because we initially don't have any kind of investments. So we'll be starting from the basics, and then we'll be growing each step by step. And we also discussed about how we would be going for impressive advertisements so as to attract children and also girls of young age, so that they will be more interested into doing this. And also we discuss about how there should be a change in attitude among every people in the company, so as to have a common upliftment and morale boost. The strategy of the company is good, that initially they are going for rural area, because there will be very less chance of the people in the rural areas of having motorcycle or cars. So initially the strategy is good, but the things that have to be maintained is about sales and revenue. So that is the kind of policy we have to adopt. And about choosing the employee of the year, as everybody has reached an agreement, that the sales and revenue person, the sales and revenue department should be given a priority in this case, because they are actually the future of the company. And so that person or that employee who can create the most impact in a very less amount of time and also in a very honest method should be given the employee of the year. So yeah, that's it from my side. Good. Everybody is done. Suman, you have also done? Yes, no, sir. Go ahead. सर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डन इंटरनल सर्वे. इंटरनल सर्वे में हमें पता चला कि सर मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज इज लो. सो हम न्यू रिक्रूटमेंट करेंगे, और जो जिनकी एज ज़्यादा है अभी 51.8 ईयर से, तो उनकी हेल्प लेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में. और फर्दर सर उनका जो एम्प्लॉयज है उनकी मोरल को इंक्रीज करेंगे. और सर फॉर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए हम फिशबोन और जो पेरेटो डायग्राम है उसको यूज करेंगे. और फर्दर एक्सटर्नल बेस पे सर जो कस्टमर फीडबैक से हम रेंज ऑफ प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे सर बाईसाइकिल के लिए. जैसे कि चिल्ड्रन बेस मार्केट हम फोकस करेंगे, और जो गर्ल्स बेस मार्केट है उसको फोकस करेंगे, और जो और मार्केट को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे. और सर जो चिल्ड्रन है उनको हम कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि जो पेंटिंग होती है उस पे हम अट्रैक्टिव कार्टून प्रोवाइड करेंगे. और जो गर्ल्स है वो ज़्यादा स्पेसिफिक कलर की तरफ होती हैं, तो हम उनको कलर स्पेसिफिक और लाइट one bicycle provide करेंगे. और one of my friends said that we provide some digital type system that provide information about calorie, that we also provide on this. And at last sir we have to give the reward to one of the employees that have done good for the organization. For that sir we have conclusion have done that sales person should be given the reward, because sales all other department totally depends on the sales sir. That's okay. Okay, done. Let me tell you now. See, you people have participated nice. You have spoken good. But let me tell you, like this entire case study was made up of two main questions. One was how to increase the sale. The problem, how to, I mean, what policies are to be changed. And second was whom to give the employee of the year award. So the problem of the this company, typical introduction you could have given was, friends, we are given a case study of a car manufacturing company which presently is in losses, and the reason for losses may be the new markets we have not explored, and the employees are very old, they are not trained, and the new competitions we are facing.
and we need to do some R&D, and we need to come out with a good product and capture new markets. And also sales and marketing team should work. So friends, I think we need to work in HR department and marketing department. These two departments we need to focus, and policies we need to make for this. And also we need to identify the employee of the year from the department which matters the most. Now I open the house for discussion. This is how you have to start. Then conclusion has to be like, friends, the two domains from where policy should be made are one is marketing department, sales department. So we need to hire new marketing managers, and because average age is very high, so we need to have very good HR department where hiring and firing continuously go, and we hire new people who are capable people, young people, and can come out with the new ideas. And also we need to identify new markets, so our marketing team will do that. New markets are to be identified and new product is to be launched. And for employee of the year, I think sales department is the most important because that matters right now. So let's give employee of the year award to that person who increases the sales most. That will enhance the morale of entire team. That is how I think this entire crux should have been discussed. So conclusion ye hai, or introduction I have told you earlier. Now, Suman, your progress, you have improved. You have improved. Introduction part was also good, and the conclusion also you have given. But you need to work some more, in this. So listen to some more GTs and start working on that. Sachin, your level is good. You can participate. You can talk also. Just be close to the topic. Sonu, you need to practice more. As of now, flow is not being maintained. You need to practice more, Sonu. And Jobin is coming up to the level now. Jobin, you have spoken. Introduction wala part was also good. Participation in between was also there, and conclusion also you could do. Same is Mayur. And Ankit, level of participation is good. Your content is good, Ankit, but you need to participate more. Don't be silent for a long time. Just participate more, and through content you can get good score. But try to either introduce or conclude in the discussion. So this is what my feedback for each one of you was. Anything you want to ask or tell? So, सर क्या मतलब जितना टॉपिक पे जितने पॉइंट डिस्कस होते हैं, क्या सारे को इंक्लूड करना है कंक्लूजन में, कि बहुत सारे पॉइंट डिस्कस हो जाते हैं? नहीं, आपको सारे नहीं करने हैं. आप समरी बनाते चले जाएं और लोगों को बताते जाएं कि ये मैंने पॉइंट इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लिया है. नाउ नेक्स्ट गो नेक्स्ट. अगर एंड में जाके कंक्लूड करोगे और पॉइंट मिस हो जाएंगे तो कोई और कूद पड़ेगा. सो कीप मेकिंग द समरी फॉर दिस. सर ये दूसरा जीटी था तो ठीक था सर. आपका मेरे ख्याल से जो पहले जीटी था उसमें काफी इश्यूज थे. यस सर. सर आपने एक्सट्रीम पे रख दिया था. एक बार मयूर ये करना कि आप थोड़ा विजिबल होके मेरे साथ पार्टिसिपेट करना. ठीक है सर. एनी अदर? सर मेरा फ्लो टूट जाता है तो कैसे फ्लो में आए? आप हिंदी में बोल सकते हैं सोनू, अगर हिंदी में आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं. Sir, while speaking, I'm getting a bit conscious, sir. Like people are looking at me and like listening to me if I fumble somewhere. Can you tell me again, Ankit? Like speaking, I am fumbling sometimes. Like I'm becoming more conscious that people are watching at me, looking at So me. this actually goes. This thing goes only with practice. More you practice, better it is for you. You need to practice more on this, Ankit. How many GTs you have done so far? Sir, this was the second one. So that's what actually practice will make you, comfortable in this. Actually, it comes with the practice. So lack of practice is visible sometimes. So practice more, start speaking more. I think that is gonna work for you. Yes, sir. Sir, one doubt. Sir, during the actual GT, if there is some kind of language barrier, can we interrupt that person and say that no? You need to speak yourself and keep around the topic. No, and if sir. everybody is speaking in Hindi and you are the only English fellow, you can always request that friends, I'm not understanding that well. So can you, if you are comfortable, can you participate in English? You can say that. Okay, so we can interrupt that person, isn't it? It is not interruption. I'll not say interruption. I'll say Yeah. you will request the team. Yeah, okay. So I want to mention here, Yeah. सेल में जब मेरा डिस्कशन था वहाँ पे,
तो one guy was from Kerala and so वहाँ के जो जितने भी पर्सन वो पूछ रहे थे कि तुम हिंदी में कंफर्टेबल हो कि नहीं हो, तो he just refused कि मुझे हिंदी नहीं आती है, समझ में भी नहीं आती है. Then the whole group had to discuss in English there. करते हैं वो. So that is very good thing actually. It should be done. Yes. So you can tell that Jobin in the beginning. Yes, sir. Where is your interview? 10th, sir, at Chennai. Okay, so Chennai mein everybody is speaking English, not a worry. Yeah. Okay. Right? Anything else? No, sir. Sir, my interview is on 16th of February. So should I start taking HR snap as well? I think HR you should start now. There should not be any Okay, delay. sir. HR so you should start as soon as possible. It takes time Okay, to sir. improve, right? Yes, sir. Okay, then I think I take leave of you, right? So work on this and keep revising all the GTs which are there. Keep revising. More effort you do, it will be reflected in your interview. Thank you.